We'll just take 2 minutes to in-gather ourselves and bring the mind to the present moment with the help of breath, totally here and now, not engaging with thoughts for the moment. In the body, right now. Disengaging from the thoughts, feelings, moods, just becoming the knowing of all that happens. I am the knowing. Yeah. So it's always good from time to time to take stance, although these words appear very like futile when we are using them, because we are always the knowing of whatever is happening in our being, whether they are thoughts, feelings, opinions building up, stories that we are creating, recreating, thinking, going on. All the time we know that whatever is going on, we are aware of it. So it doesn't appear right when we begin to say that, okay, let us become the knowing for the moment, because we are always the knowing. But it is somehow the usage of words is such that we have to disengage, and for that we say, okay, for in this moment let me know that I am the knowing, and that helps us to disengage. It's very important for us to practice this, because otherwise we are always lost in the drama of our life. And at times when it is pleasant, it is good, you don't need to disengage, everything is hunky dory. But when it is very troublesome, when that story really drags us and sways us here and there, then the disengagement becomes very difficult. So not only in the difficult times, but also in the good times, we should always, that's what masters have said. That's why we are reading right now, for example, The Heroic Heart. And Jetsunma, in every talk, she stresses upon this, that we are not the surface level, chaotic, all the time, turbulent mind. We are something behind. There is a subtle level of consciousness which is always conscious of whatever is happening. So we have to again and again step back and take stance as that. अदरवाइज जो भी हैपनिंग्स होती हैं लाइफ की, उसमें हम बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं बिल्कुल. एंड दैट इज व्हाट बिकम्स द रूट ऑफ अवर सफरिंग. कुछ अच्छा हो रहा है, तो जब वो अच्छा हो रहा होता है तो वी डोंट नीड फील द नीड टू डिसएंगेज, राइट? सो दैट्स व्हाई कबीर जी सेज कि सुख में सुमिरन ना किया, क्योंकि सुख में सुमिरन करने की हमको जरूरत ही नहीं लगती, सब कुछ तो ठीक है, तो डिसएंगेज क्यों करें, है ना? इमेजिन अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज वेरी प्लेजेंट. You would not feel the need to know yourself as the knowing and something that you are knowing, the content of knowing. You would not feel the need to disengage. But it's only when the story begins to take a different form, because everything that gives us pleasure sooner or later gives us pain. कुछ आया हमारी जिंदगी में, उसने हमको कुछ खुशी दी, जब वो जाता है तो वो दुख देता है. क्यों? क्योंकि हम चिपक जाते हैं. तो ये चिपकना ही कॉज है रूट ऑफ सफरिंग का. दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग इन एवरी सेशन. वी आर indirectly reading this,
that there is a desiring soul in us which is very sticky and it just sticks to everything. Jetsunma also shares this, that we have to become non-sticky, Teflon like, like Teflon coating होती है तो उस पे वो non-stick covering कहते हैं उसको. Because like that, when we live, then life is not pain. Life is progress, can be progress. But how we live is that जब खुशी आती है तो हम आने देते हैं उसको, लेकिन जब वो जा रही होती है तो हमको बहुत तकलीफ देती है क्योंकि हमारा कुछ पार्ट उससे चिपक चुका होता है. तो नॉन चिपचिपे कैसे रहें? टू क्लिंग ओनली टू द डिवाइन. When we are clinging, when we are backing ourselves only to the divine, then things can come, things can go, but nothing is sticking, because all that sticking is now turned towards the divine. जैसे आपके पास एक वेलक्रो है, वेलक्रो आपने चिपका दिया जाके, अब बाकी चीजें आपको नहीं चिपकेंगी क्योंकि अब वो वेलक्रो वाली जो साइड है वो चिपक चुकी है डिवाइन को. But slowly only, I think it's a progressive thing that happens in our life, that slowly only we realize about our attachments and weaknesses, and slowly then they become the raw material for our progress, in the sense that we begin to, whatever gives us pain, we realize that, oh, I became attached. So it's good to see where this pain is arising from, because that's how we see where the progress has to be done now. उसी से पता लगता है कहाँ पे अभी बाकी है, कहाँ पे अभी बाकी है काम. और अदरवाइज जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा होता है, बहुत खुशहाल होती है सिचुएशन, तो हमें लगता है अरे क्या जरूरत है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की. बट जब वो चीजें छिनती हैं तो एकदम से दर्द देती हैं, और जब दर्द देती हैं तो पता लगता है कि अरे फिर से चिपक गए थे. पता नहीं लगता, जब वो हो रही होती हैं अच्छी चीजें तो पता नहीं लगता कि चिपके हुए हैं, तब लगता है अरे डिटैच्ड ही तो है सब कुछ. जब वो चीजें छिनती हैं हाथ से तो वो दुख देती हैं, तब पता लगा है ओ यहाँ पे भी अटैचमेंट था. सो all these sessions, wherever, whatever we are doing, the crux of the matter is that all of us are not craving for dukh in our life. We are wanting joy and happiness, all of us, contentment. And where is the root of all that? And where is the root of dukh and suffering? So that's what slowly through our life experiences we discover for ourselves, and then we try to practice. Yes, Deepa? So we say that pain is part of our lives and that we have to be more accepting and let it flow. So are we saying detachment because we are scared of pain, or is there some other reason? Is it not okay to kind of accept it as a normal emotion and let the attachment also stay and pain also stay? Yeah, let it stay. If you can live like that, So the let it stay. reason why the spiritual gurus tell detachment is it anything beyond the pain, or is there something more to it? Yeah, there is something more to it actually. And that is why you will see that we cannot live. अभी आप कह तो रहे हो कि क्या डिटैचमेंट में इसलिए नहीं मांग रही कि ताकि मैं दर्द से दूर रहूं, है ना. तो ये तो बड़ा मतलब एज इफ कि कोई सेल्फिश एजेंडा है, तो दर्द भी रहे अटैचमेंट भी रहे, क्या फर्क पड़ रहा है ना, रहे ऐसा ही जीवन. तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा अगर रखना चाहते हो तो आप रखो बिल्कुल, मतलब दैट्स व्हाट द फ्री विल वी हैव ना. दिस इज फ्री विल, कि आपको पूरी आजादी है that if you want to remain attached and to live with pain and suffering throughout your life, there is no one who will stop you. कौन आ रहा है पीछे आपके कि बस कर मत कर? कोई नहीं आएगा. एक दिन आपको खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस से पता लगेगा कि दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव, बिकॉज देयर इज समथिंग विद इन अस, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, which tells us about things which take us upwards, and which also tells us things that take us downwards, है ना. तो अगर कोई हम में से कोई एक शराबी है और बोले कि यार क्या प्रॉब्लम है शराब पीने में, है ना, हर बंदा कहीं ना कहीं लिप्त है, तो मैं यहाँ लिप्त हूँ, मुझे रहने दो तुम लिप्त, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है अगर तेरे को ठीक लग रहा है ये तो रह लिप्त. बट एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमें वो ठीक लगना बंद हो जाएगा. क्योंकि देखो,
दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि हमको ये सेंसिटिविटी दी गई है दर्द के प्रति। तो अभी आप बेशक ये कह रहे हो कि अटैचमेंट रहे, पेन रहे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। आफ्टर सम years when you have tasted it enough, you can't say that. You will know within that this way of living is not my best possibility, because human being, मदर कहती है ह्यूमन बीइंग की आंखें आगे की तरफ है। एनिमल्स की देखी होंगी, लेफ्ट राइट होती है ना, एक लेफ्ट एक राइट। ह्यूमन बीइंग की आंखें आगे की तरफ है, गेज आगे की तरफ है, बिकॉज इट्स ह्यूमन ओनली हु कैन ऑलवेज प्रोग्रेस फर्दर एंड फर्दर टुवर्ड्स फ्यूचर। हमेशा हम आगे की तरफ, पीछे हमको चांस दिया गया है देखने का, है ना। हम बार बार पास्ट की तरफ देखते हैं, उसका चांस हमको दिया गया है, बट हमको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अच्छा पीछे जो हुआ वो छोड़ो, अब आगे देखो, आगे क्या बचा हुआ है, क्या कर सकते हो अब। तो दिस थिंग इन अस विच इज प्रेजेंट, इट कंपेल्स अस टू गो फॉरवर्ड एंड सीक अवर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। सो ये जो अभी हम कह रहे हैं कि चलो यार रहने देना, प्लीज रहने देना, जैसे नींद करनी है आपको, नींद बहुत अच्छी लग रही है, एक दोस्त उठा रहा है, आ रहा है सुबह, चल 4 बजे हम ना जॉगिंग करने चलेंगे, कहते हैं प्लीज यार सोने दे, सब तो सोते हैं। तो वो दोस्त क्या कहेगा, ठीक है तू सो ले। ज्यादा अच्छा दोस्त होगा तो वो पानी डाल देगा तुम्हारे मुंह पे और ले जाएगा तुम्हें। तो ये वही वाली बात है कि अभी जब तक सो सकते हैं, सभी सोते हैं, ऑल ऑफ अस। बट देन देयर कम्स अ टाइम इन अवर लाइफ दैट वी कांट स्टे लाइक दैट। ये अपने आप सबके जीवन में एक ना एक पॉइंट आता है दैट यू टर्न बिकम्स इरिवर्सिबल, लाइक यू कांट टेक अ यू टर्न नाउ, एंड इट इज अ वेरी गुड स्टेप ऑन द पाथ, कि अब हम पीछे नहीं जा सकते, अब जाना तो आगे ही पड़ेगा, चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, यू विल एंड्योर। देखो अटैचमेंट छोड़ने में दर्द होता है, बिकॉज अटैचमेंट इज लाइक एडिक्शन। जैसे हर एडिक्शन को छोड़ने में, एक बार आपने यू हैड शेयर्ड विद अस अबाउट एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, है ना, वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट। तो जैसे किसी भी एडिक्शन को छोड़ने में दर्द होता है, अटैचमेंट को भी छोड़ने में दर्द होता है। क्योंकि वो जहाँ, जैसे ना आप, जैसे आपके हाथ में कभी अगर आपके वो फेवी, कौन सी होती है, फेवी क्विक जो एकदम से चिपक जाती है और आपका फिर वो, है ना, इट्स नॉट फेवी स्टिक, फेवी स्टिक तो इट्स हार्डली एनीथिंग, फेवी क्विक अगर वो हाथ में चिपक गई है और आप चिपका कुछ और रहे थे, खिलौना या कुछ चिपका रहे थे, लेकिन वो आपके हाथ में चिपक गई, तो नाउ इट टेक्स अ while इट कम्स आउट एंड गिव्स पेन, फॉर एग्जांपल। तो अटैचमेंट इज लाइक दैट, गिव्स पेन व्हेन इट इज टीयरिंग ऑफ। तो तभी हम बात करते हैं कि सुख और दुख की, कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद। क्योंकि जब बहुत मजे आ रहे होते हैं जीवन में, तो मन नहीं करता कि मैं डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करूं, किसी का मन नहीं करता। तभी हमको दुख चाहिए होता है ताकि हम डिटैचमेंट कर पाए। सबको चाहिए होता है ये, अभी हमारी ऑर्डिनरी स्टेट ही कॉन्शियसनेस की ऐसी है। बहुत रेयरली होता है, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं ना, तब आप देखोगे कि जब आपके जीवन में खुशी है, तो आप उसको देख पाओगे, आप खुशी के साथ बह नहीं जाओगे। क्योंकि अगर हम बह गए और उसको रियल समझ लिया, तो वेरी सून दुख आने के लिए पीछे तैयार बैठा है। ये दिस इज द डिजाइन ऑफ क्रिएशन, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। दिस डुअलिटी, है ना, कि सुख ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा, उसके बाद दुख उसके पीछे खड़ा हुआ है आने के लिए। इस ये दिस इज द डिजाइन ऑफ इगोइस्टिक लाइफ। नो, नो ईगो कैन रन अवे फ्रॉम दिस, चाहे वो कितनी भी हाई स्पिरिचुअल ईगो, डजेंट मैटर। अगर ईगोइस्टिक प्लेन पर हैं, इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस पे हैं, उस प्लेन पे क्या लॉ ऑपरेट करता है कि ये इतनी दूर तक जाएगा और फिर वो दुख में बदल जाएगा। सो व्हेन यू वर शेयरिंग कि चलो ऐसे ही रहते हैं, दर्द के साथ रहते हैं, तो वो इसका मतलब मुझे अभी ईगोइस्टिक प्लेन पे और रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम रहना चाहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं रहा, हम रह सकते हैं। बट मजे की बात यह है, और कंपैशन कह लो या करुणा कह लो भगवान की, कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप बोलोगे अब नहीं रहना। अब नहीं रहना, हाथ जोड़ रही हूँ, इस प्लेन से उठा ले, निकाल ले, है ना। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है जीवन का। दर्द होता है बट इट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि वो आप देखो ना कि अब उस प्लेन पे नहीं रहोगे, तो अब आपको कहीं आगे ही जाना है। ये बड़ी अच्छी बात है
कि उसके आगे ही पॉसिबिलिटी है, पीछे नहीं जा सकते, वापस एनिमल तो बन नहीं सकते। तो ह्यूमन कैपेसिटी, इगोइस्टिक ह्यूमन कैपेसिटी के आगे ही जाओगे, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से I am able to see it right now. If there are more reflections, they are welcome. I have one question, Didi. Uh, Thank you so much. What you shared is very helpful and very. Yeah. So I want to ask कि सुख में डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करें? क्योंकि मतलब दुख में तो भगवान करा ही देता है, उसमें तो हम रिसेप्टिव हो ही जाते हैं। मगर सबसे बड़ा मतलब क्रक्स यही है इस सिचुएशन का, जो मुझे समझ में आया कि आपको सुन के कि मतलब सुख में डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब सुख में मतलब एक और चीज होती है कि हम सुख को कभी कभी पूरी तरह इंजॉय नहीं करते। मतलब लाइक मैंने नोटिस किया कि आउट ऑफ द थॉट की ऑफ डिटैचमेंट, मतलब हम फिर कभी कभी फियर में डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं सुख में कि अरे इससे नहीं नहीं। ज्यादा अटैचमेंट हो ये कभी भी है या कुछ ऐसे, मतलब लाइक इट्स आउट ऑफ फियर एट टाइम्स, आउट ऑफ लव फॉर द डिवाइन। मतलब वो एक उसमें आपकी आवाज चली गई है चेतना। इट वाज क्रैकिंग। हाँ, क्रैकिंग। हाँ, सो कहीं ना कहीं वो ये भी हो जाता है कि डर हो जाता है सुख डर में होना कि चाहिए, ये हम अच्छा कभी डर है, कभी डिटैचमेंट। ये अच्छा डर है, अच्छा, बहुत अच्छा डर है। डर के लिए बोला ओके गया है ना, मास्टर्स हैव सेड, डर करनी डर ओके परम गुरु, डर पारस डर सार, ये कबीर जी कह गए हैं। डरता रहे सो उबरे, गाफिल ओके खाई मार। एक मतलब जो निकम्मे हैं, जो डरते नहीं है, देखो उसको निकम्मा कह रहे हैं इस सिचुएशन में, स्पिरिचुअल पाथ पे। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरते रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। तो ये जो राइट स्पिरिचुअल पाथ पे ये वाला डर कि मेरा जीवन बर्बाद चला जाएगा, या अगर अभी मैं डिटैच नहीं करूंगा तो बिल्कुल इसने आना ही आना है, ये अच्छा वाला डर है, ये होना चाहिए। हमारे ओके गंदे तरीके के जो डर होते हैं, किसी बंदों से डरना और ये करना है ना कि ये बुरा ना मना जाए, उन डरों को पीछे छोड़ना है। ये जो वाला डर प्रोग्रेस अच्छा को है। समझ गई मैं आपकी बात कि जो प्रोग्रेस को रोक रहे हैं डर उनको हटा दो, मगर जो प्रोग्रेस में हेल्प कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, उनको रख बिल्कुल। लो, वो वाले। हाँ हाँ। और दूसरा जो आप कह रहे थे ना कि सुख में कैसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, इसका एक तरीका जो क्लियरली दिखता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, विच मास्टर्स हैव सेड, इट्स नथिंग न्यू। आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, रीफ्रेजिंग, वॉट एवर वन में से। देखो अभी हम श्री अरबिंदो का जैसे हम सिंथेसिस ऑफ योगा अभी हमने शुरू किया, उसमें आपने देखा होगा चैप्टर बाय चैप्टर वन थिंग दैट ही वाज स्ट्रेसिंग अपॉन, रिलीज फ्रॉम ईगो, रिलीज फ्रॉम ही हार्ट एंड माइंड, रिलीज फ्रॉम द सब्जेक्शन टू बॉडी। उसमें एक चीज कॉमन थी, क्रक्स थी, इफ ऑल ऑफ अस में यू नो कनेक्ट विद दैट, एंड दैट वाज stepping back as the witness, knowing ourselves as the witness. रूपर्ट स्पायरा, जब हम उनकी टॉक्स सुनते हैं या जेत्सुनमा की बात सुनते हैं, सेम चीज कही जाती है, वो विटनेस का नाम नहीं ले रहे हैं। जेत्सुनमा क्या कहती हैं, वी आर द प्रिस्टीन अवेयरनेस, वी आर द कॉन्शियसनेस विच इज अवेयर ऑफ ऑल दैट, द सटल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, शी यूजेस दिस वर्ड, ठीक है। वी आर नॉट द सरफेस लेवल चैटरी चैटरी माइंड, शी यूजेस। और यही चीज श्री अरबिंदो कैसे कह रहे हैं कि वी आर नॉट द सरफेस वाइटल, सरफेस chaotic consciousness, but we have to step back into deeper layers of consciousness like the witnessing consciousness. रूपर्ट स्पायरा इस चीज को कैसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि वी आर द नोइंग ऑफ ऑल द हैपनिंग। तो हर मिस्टिक, हर मास्टर ने एक
इस तरीके से बताया है कि हम वो नहीं है जो हम समझते हैं कि हम हैं, और विचारों से पीछे स्टेप बैक करने के लिए बताया है। तो सुख में डिटैचमेंट कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है, व्हेन आपकी लाइफ में कोई सुख आया है और आप उसके अंदर लिप्त होना चाहते हैं, उसी समय अगर आप अपने आप को देख लें और स्टेप बैक करें, आप वहीं पे हो, आप इंटरेक्शन पूरा कर रहे हो, आप कुछ कमी नहीं छोड़ रहे हो इंटरेक्शन में, पूरा श्रद्धा भाव से आप उस इंटरेक्शन में हो, बट उस इंटरेक्शन से आपका कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर इन अ स्टेप बैक पॉइज विद इन, and you are again and again taking stance as the knowing of everything that is happening. ये stance बहुत जरूरी है हमारे लिए. I am again and again taking stance as the witness of the events happening. I am the knowing of the happiness, I am the knowing of the sadness, I am the knowing of the thoughts that are coming right now. जब बार बार आप ये knowing में step करते रहते हो ना, आपको डिलाइट फील होनी शुरू हो जाती है. करके देखो, आप 2 मिनट करोगे, मजा आएगा. उस डिलाइट को हम हर जगह ढूंढ रहे होते हैं. एक बार आपको अपने अंदर ये मिल गई तो फिर आप फिनोमिना पे डिपेंडेंट नहीं होगे कि मुझे उसके थ्रू मिले. फिर आप सुख को ग्रास्प करने की कोशिश नहीं करोगे, है ना. सुख आएगा आपकी लाइफ में, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा, यू फील एक्चुअली ग्रेटफुल दैट की अपॉर्चुनिटी आई आपकी लाइफ में. बट आपको उस इंटरेक्शन से कुछ अब चाहिए नहीं. क्यों? क्योंकि जो कंटेंटमेंट है वो आपको अपने अंदर दिख गई है. अब the only thing that you have to do is to stabilize that contentment. इसी के लिए लोग 3-3 साल केव और फॉरेस्ट में जाके बिठाते हैं, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन नहीं होता, बहुत सटल है ये. आपको 1 मिनट ग्लिम्स दिखेगा उस नोइंग का, फिर एकदम से छिन जाएगा, एकदम से थॉट्स में लॉस्ट हो जाओगे आप. ये आपने सबने देखा होगा जो जो मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं. तो बार बार हमको मेडिटेशन में वी हैव टू स्टेप बैक एज द नोइंग. पहले हम ब्रेथ के साथ बैठते हैं, विच इज वी कॉल पिन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन और क्षमता मेडिटेशन, है ना. ताकि माइंड जो स्कैटर्ड है, उसको आदत है हमेशा डिस्कर्सिव रहने की, स्कैटर रहने की, उसको हम अपनी कमांड में लाएं. कि हमने बोला 10 मिनट बैठेंगे तो वो बात सुने और वो 10 मिनट बैठे. ये है कॉन्सेंट्रेशन. ये पूरी मेडिटेशन नहीं है, ठीक है. ब्रेथ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. एनीथिंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. आप अपने सामने कोई कैंडल जला लो, है ना, आप माँ का नाम याद कर लो, माँ की फोटो को देखते रहो, ब्रेथ को ले लो, बॉडी की किसी भी एक सेंसेशन को ले लो, बॉडी के किसी पार्ट को ले लो, है ना. तो उससे माइंड इन गैदर हो रहा है. अब क्या है, उसके बाद का भी स्टेप जत्सुन्मा बताती हैं. She says that for many years people just keep on doing Shamta meditation, which is focusing on the breath, but they forget the main essential ingredient. कि आपको ब्रेथ में थोड़ी ना कुछ पड़ा था. पड़ा कहाँ था? Who is the one who is looking at the breath? अल्टीमेटली वहां जाना था ना. हम ब्रेथ के पीछे पड़ गए. तो जत्सुन्मा शेयर्स दैट मेनी टाइम्स, कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो आप उसको बिल्कुल बुद्धू की तरह फॉलो कर रहे हो, विच इज अच्छा. उस समय वो कॉन्सेंट्रेट आपका हेल्प ही हो रही है आपकी कॉन्सेंट्रेशन में. बट देन शी सेज दैट somebody comes, some lama or master comes, and then he points out that you have to be aware of the awareness which is aware of the breath. ब्रेथ के अंदर तुम्हें कुछ खजाना नहीं मिल जाने वाला. The awareness which is aware of the breath, there you have to place attention now. You have to become that, if I can say, because you are that. तो वो स्टांस लेना होता है वो वाला. तो ऐसे हम सुख में डिटैचमेंट करते हैं कि जब बहुत अच्छा कुछ हो रहा है लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे अच्छे में बहे नहीं जा रहे, आपको वहां से कुछ नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि आप जब एज अवेयरनेस स्टांस लेते हो तो आप वो डिलाइट फील करते हो. इवन इफ यू आर एबल टू डू इट फॉर 2 minutes, you will see that you feel that delight when you are present as the knowing of all experience. सत चित आनंद, ये उसकी क्वालिटी है. आनंद उसके साथ कॉन्जॉइंट है, वो अलग अलग नहीं है. चित इज कॉन्शियसनेस.
Sri Aurobindo joins it with Chit Shakti. He says it joined with because it empowers us. है ना, जब भी आई एम टेकिंग स्टांस एज द नोइंग, है ना, जब आप लेते हो यू आर एम्पावर्ड, क्योंकि अब आपका कहीं भी आउटवर्डली पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बचा. जो हमारे आउटवर्ड इंटरेस्ट होते हैं वो हमको ड्रेन आउट करते हैं, वो हमको डिसएम्पावर करते हैं. सो दिस इज हाउ आई कैन स्टेप बैक एंड be the witness even when sukh is there. Why? Because I have had a touch of greater sukh within myself. So now that sukh is also, I know it will come and it will go. Just like everything in life will come and go. But this which I have found within, that is sat, that is eternal. That's nobody. I can be in the prison. I can be in a very dilapidated state, but I still have access to that knowing within me. कोई नहीं छीन सकता वो आपसे. ये वो मीराबाई का गाना है जो है ना, एक पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, चोर ना लूटे और क्या क्या ना पूटे, है ना, बोलती है ना कि कुछ भी इसको छीन नहीं सकता. तो ये वो वाली. और दिन दिन बढ़त सवायो, तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर से इट वेल्स अप, इट गिव्स मोर एंड मोर. तो अभी हम जिस एम्प्टीनेस की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, दैट एम्प्टीनेस इज व्हाट वी हैव टू एंड्योर. क्योंकि स्टार्टिंग में वो सब एम्प्टी लगता है ना, धीरे धीरे इट बिकम्स टू काइंड ऑफ ooze out its potentialities. तो ऐसे सुख में डिटैच करें. और एज यू सेड वेरी राइटली दैट दुख में तो हमारा डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सहा नहीं जाता. तो हमें लगता है भैया अब क्या करे क्या करे क्या करे, बचा लो बचा लो बचा लो. तो वहां पे आपको विटनेस होना ही पड़ता है, साक्षी होना ही पड़ता है, क्योंकि वो बचना है उससे जब बहुत ज्यादा इंटेंस घोर दुख आता है. तो काफी हमारे पास स्टोरीज हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स की in Buddhism and otherwise, where they went through immense amount of suffering before they woke up to who they truly are. Immense amount of suffering. Many examples. Jeff Foster, Eckhart Tolle, Byron Katie, among the contemporary ones. Even Deepa Ma, Buddhist teacher, she is that I was going through immense suffering and it was only meditation that saved me. There's this also like, detachment. When I say, just very recently only I experienced it, question resonated, how to detach when one is happy, when things are okay relatively. And I was just thought came to my mind that, like, when I say detach, I have an assumption that this thing is mine, it belongs to me. So in happiness I'm talking. But if I have this bhav that, this belongs to the Krishna, that belongs to the mother, then I don't need to be detached. I can be with it and yet not detached, because that I is gone. Of course, it's very easier said than done. But like, I remember, just yesterday only I was experiencing this planning we are doing for a ceremony, which I wanted for a very long time, had a lot of suffering in that. Let it go, thinking that, okay, now I'm very detached with it. Whatever happens, happens. Now the time came when it has to happen. Things started to arrange. And, I was, okay, when you dress this, and then there was, that thing came back, that possessiveness, that stickiness, that this has to be like this has to be like this. And yesterday, whole day went into like that completely. And today also, when I was looking, there was a lot of pain, I don't know, pain or not, easiness around the chest center. And that was saying, what am I actually doing? Why is there so much possessiveness that things has to be like this, likes to be like that, everything has to be like this? What is happening with me? Like, it's not giving me pleasure anymore. Although it is something happy, it is not something sad, it is something beautiful. People would consider this event as something, the most beautiful event of your life or something.
But for me, it is bringing me misery because I'm thinking I'm getting too much sticky with it, that it has to be like this. And then I thought, okay, I just went in front of the mother's picture because it was not leaving me. I was having, oh, if I'll not do it, who will do it? This. My mind was like completely zombing me out. And I just thought, okay, just, relax. I just went to the mother and I said, look, mother, this event is yours. It happens or doesn't happen. It shouldn't impact me this much, but it is impacting me at the moment. But can you please make it yours? Can you plan it? However, it will happen, whatever will be, I will give me the strength to accept it. And it became very easy. Like it genuinely, for some time at least, I know it will come back after some time, but at least for a few days now, it's easy, even preparing, because now in my mind, I'm saying that this is mother's. Everything will be mother is going to do it. There shouldn't be any I. So, and it brought a little bit, ease into it. I'm not saying I overcame or something, not at all, but a little bit ease. At least the mind is quiet, and this okay, an aha moment, okay, yeah, it's being done. So I mean, that for me has a little bit, just recent example of little bit, had that in the moments of happiness, excitement, things that you think, you feel, oh wow, this is good. If you just make it hers, if you just give it to the divine, the universe, whatever you think, and not say, oh, this is mine, this child is mine, or this marriage is going to be mine, or something like that, or some whatever house, whatever positions. But this is mother's, this body's mother's. I think that might help with detachment a little bit, बिल्कुल but I still बिल्कुल don't know. बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल उसी चीज को देखो, वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है ना। ऐसे जत्सुनमा कहती हैं कि द मेन मंत्रा इन बुद्धिज्म इज लेट गो, इट्स नॉट ओम मनी पद्मे हुम। तो वही आप कह रहे हो है ना, जो हम अभी नॉन ग्रास्पिंग की बात कर रहे थे विटनेसिंग में, उसको आपने एक डिफरेंट तरीके से बताया, विच इज नॉट वांटिंग टू ग्रास्प, because you see that grasping brings you suffering. That's what your experience was, that the mind is grasping onto a particular form of this ceremony, and that is bringing me suffering, and I'm uneasy with it, and I'm sensitive to that unease, and I say, okay, what is my better possibility in this moment, and that's what I go for. So beautiful, this is how we actually progress ahead. जो जैसे दीपा ने भी स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, कि अटैचमेंट भी ठीक है, पेन भी ठीक है, बट हम देखते हैं कि हमको नहीं ठीक है वो, है ना, क्योंकि वो दर्द देती है, और वो इतना दर्द देती है दैट इट्स नॉट अ यूजुअल स्टेट ऑफ बीइंग if one is sensitive. If you are stone like, then of course it will not, maybe you have become so used to it or have hardened your skin, and maybe एक चढ़ा लिया और बस टून हो गए, और जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे. But we are not stone like. We have been given this sensitivity which tells us that something is wrong. I need to shift my attitude. तो ये बहुत अच्छा है जो आपने अभी बताया, to shift, to be sensitive to the unease, and then to shift the attitude, and whichever way it may happen, the shifting of attitude. Yeah. Anybody else on this? Anyone? Yeah, hi. So although I feel a lot has already been shared, but still, first of all, this what you shared about Jetsunma, I think that's so nice. Matlab, honestly, what she says that the main mantra is letting go. And this, I mean, if I've heard her maybe for 20 hours, for example, there are just two things I've heard. This one is letting go, and second is have a good heart. And you know how everything can be so simplified, and yet we don't go to that simplicity. And about that thing, it's like once I experimented with this and it stayed with me, that if I say, I love you, like if I feel it, okay, I love you, it feels good. And if I say, I love, it just feels, I don't know, it's more expansive to me, that I love. And then it was like just love. Like first remove the I, you, then I remove the I, and it was the most expansive. So about attachment, I felt, how it's like I feel it has to be limited. It has to be this is the box. So it just was very practically, I could feel it in my body
when I was sitting with myself and just experimenting, So that, and about that witness, yesterday only I was reading something in Savitri, and there was just this one line I felt which was kind of a clue, and I could be totally wrong. It's Canto 3, Book 1, and there was this line, his soul stood free, a witness and a king. Like after saying a lot of things, this is going wrong, that is going wrong, this goes here, this goes there. But he spoke about Ashwapati that his soul stood free, a witness and a king. So I felt as if the hint is that unless you are a witness, kingship is not possible for you, right? Like, although it wasn't, like it felt that maybe this is what it is. So it's really again and again and again coming to me, and about detachment from pleasure. Like I've had a few experiences, and I think I would have shared them there also, but they stayed with me. I just share one that I had to do a big task, like, give an apartment for rent and stuff. And I had given myself maybe a month. It will take a month to do this. And somehow the first person who came, they liked it, I liked them, and there was this thing that it would happen, a very, simple give and take thing. And suddenly I felt such an elation that, oh my God, it's happened, it's done. And in the same moment, a voice came that tomorrow, if they do something which is not okay, you are the one who will be saying, oh God, what did I do? So किस बात की खुशी हो रही है, मतलब थमो, kind. So this comes like suddenly, when you are kind of, I feel, I don't know, with grace, when one is just bit more aware कि कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, कहाँ जा रहे हो. तो वो दुख में भी होता है और वो सुख में भी होता है कि when that fluctuation suddenly comes, it catches your attention कि ये क्या हिला, and you're like okay, just, and then it was stable. Then it was stable कि okay, fine, good, everything is fine. And I could also then do things more, I would say, with the more centeredness, because sometimes when you're up and down, you end up doing things which are not okay. So I felt it really grounded me within, it happened so fast. So such examples, they do happen, and I feel, and they stay, I mean, they stay with you because it's something against, right? Like your regular thing. Yeah, there were more things, but yeah, thank you. इसी पे वो याद आया कबीर वाला, मोह सलिल की धार में बह गए गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है चढ़ती उल्टा नीर. वही जो आप बता रहे थे ना कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्वेड विद दैट अप और डाउन, बट इफ वन इज अवेयर तो वो उल्टा नीर, उल्टी पानी की धारा में भी ऊपर जा सकता है. व्हाट यू वर शेयरिंग एग्जांपल, लाइक सो यू स्टॉप्ड वेयर यू कुड हैव फ्लोन विद द फ्लो. एंड देखो, अभी हम जो पहले बात कर रहे थे वहां पे ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब, इसका मतलब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ना हो, है ना. तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो पुराना टेस्ट है ऑफ लाइफ, वो दैट इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट. जैसे टेस्ट ही पड़ा हुआ है, या तो जलेबी सुबह उठ के खाएंगे या समोसा खाएंगे. मतलब उबला हुआ कद्दू तो सोच ही नहीं सकते, या प्लेन पानी तो सोच ही नहीं सकते, है ना. तो और कोई खा रहा होगा तो ऐसा लगेगा पागल तो नहीं है, लाइफ जी रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब उबला हुआ कद्दू सुबह सुबह खा रहा है. तो हमारा क्या है, जो हमारा टेस्ट है वो एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट का टेस्ट है. उसके सामने ये न्यूट्रलिटी थोड़ी बोरिंग अपीयर होती है दूर दूर से. बट जो बंदा कर रहा है, जैसे आपने अपना बताया, नंदिनी अपना बता रही थी, उसके लिए वो बोरिंग नहीं है. उसके लिए तो एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है ना. ही नोज दैट देयर इज अ मीनिंग हियर. तो वो जो न्यूट्रलिटी है, जब श्री अरबिंदो समता की बात करते हैं, दैट द क्वालिटी ऑफ सोल कॉन्शियसनेस इज दिस इक्वानिमिटी. तो ये इक्वानिमिटी की तो हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा उछल नहीं रहे, भंगड़ा करना नहीं शुरू कर दिया. और अगर बहुत ज्यादा कुछ खराब हो गया तो उसमें ये नहीं कि भाई, है ना, मतलब हाई ये क्या हो गया, हाई ये क्या हो गया, क्योंकि हमें आदत ही उन चीजों की है. तो जो आपने स्टोल हिज स्टोल सोल stood free, a witness and a king, that is how we slowly actually take, one can say that one has a realization of soul consciousness, that ये भी possibility है.
यहाँ पे भी, और that is what we call as, one can say, contentment within. जिन चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट और उस चीज़ों के लिए जो बाहर भागा जा रहा था, वो अब जब आपको अंदर मिल गई है, तो आप क्यों बार बार एक्साइट और डिसअपॉइंटमेंट का चक्कर काटोगे? वो तो बड़ा लंबा डिटूर है ना, आपको घर में मिल गया वो, तो अब इतना लंबा डिटूर क्यों लेना है? और फिर भी ऐसा नहीं है कि बाहर के काम नहीं होंगे, मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द इंटरेक्शंस विल हैपन, द वर्क विल बी डन, relationships are going on, everything is going on as usual, but there is no personal interest that you have in them. आपको वहां से कुछ भी नहीं चाहिए. Disinterested love, as mother says, you were talking of, love, कि I भी हटा दिया, you भी हटा दिया, तो अब disinterested love, कि प्यार है बट किसी को भी किसी से कुछ चाहिए नहीं है कि तू मुझे ये दे दे क्योंकि मुझे तेरे से प्यार है ना. यूजुअली ये करते हैं. या फिर ये बोलते हैं कि तूने मुझे वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे तुझसे प्यार था. तो वो जो ट्रांजैक्शनल माइंड है, जो बार्गेनिंग माइंड है, उसको हमने अब, उससे अलग हो चुके हैं. वहां पे जाना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. सो यस. And this is what, again, coming back to the topic of the book, is heroic heart. यहाँ पे हीरोइज्म ही तो चाहिए. आसान थोड़ी ना है उस मोमेंट में रुक जाना. बहुत करेज चाहिए होती है. But there is something within us which knows that you've taken the right step. जब हम वो करेजफुल स्टेप ले रहे होते हैं, करेजियस स्टेप ले रहे होते हैं. Anything more? Anyone here? Okay, so we were about, I think, around this page. This is what Lojong is all about. Lojong means mind training. Developing the confidence and the qualities that will help with whatever happens to us in our lives as our practice. Instead of moaning and complaining and feeling sorry for ourselves, we appreciate that this is our opportunity to practice properly. ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि चाहे सुख हो रहा है चाहे दुख हो रहा है, it is time for practicing properly. It is pointless to be a fair weather Buddhist who practices when the sun is shining but runs for cover as soon as it starts storming. So taking everything in our stride, whatever falls and failures we may have on the path, everything has to be taken as a raw material. Nothing has to be left. और उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी बार हमको humiliation, insult, all of that is allowed. We all have to face those things because that happens to the ego consciousness. And from time to time we have to, when we are putting, like, किसी चीज के लिए आप जिद्दी होके बैठे हुए हो और अगर अब अपनी आप जिद हटा रहे हो कि चल कोई बात नहीं, यू आर लूजनिंग योर स्टांस अ लिटिल, तो उसमें काफी बार एक ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट या समथिंग वियर्ड, उसका सामना हमें करना पड़ता है. बट दैट्स वेयर द करेज लाइज टू गो थ्रू दैट. The Buddha taught that the unendurable suffering of the lower realms is the fruit of unvirtuous action. So we will today read this last 2 pages, if possible. Yeah, so who would like to read starting from the lower realms or the hell realms? Yeah. The lower realms are the hell realms, the realms of unsatisfied spirits
and the animal realms. As Shanti Deva pointed out in the Bodhisattva, who created the red hot floors and the demons who torture the beings there. All these are created by the perverted mind. We live in a world of our own projections. When we are happy, everything is sunny. When we are depressed, the brightest day is gloomy. Since we have an apparent physical basis, which according to quantum physics is neither physical nor as apparent as we assume, our projections are totally subjective. As humans, we are all equipped with certain kinds of sense organs and consciousness. So there is a general consensus about how things are, despite the distortions of our emotional reactions. Two people might go to the same place and experience a completely different version of the situation depending on their mental state. But in the non-physical realms, which include the hell realm, everything depends on our state of mind, which means that we project our psychic state outward and then we react to it. Should I carry on? I think इसको भी हाँ इसको भी ले लो ये वाला था. ठीक है. Actually, if one reads certain sutras, it seems as if for everything we do, there is a hell realm. One time, I went to my Lama, Khamtrul Rinpoche, and said, well, it is impossible. For everything, there is a hell realm. Rinpoche just laughed and replied, oh, well, we just write like that to frighten people into being good. He said that it is actually difficult to get into the hell realm because they depend on a mind state that delights in cruelty and in hurting others. There are people who take pleasure in evil and the suffering of others, who enjoy inflicting pain. They are far from their original Buddha nature. When they die, they project all the darkness and cruelty inside their minds, which return back to them. Then they react angrily and fearfully, creating more hallucinations in an endless cycle. This is why it is so difficult to get beyond those states. One is trapped in endless paranoia, anger, and fear. So again, we may not know about these realms, but these realms are existing. Even Mother Shri Aurobindo, we read, there are several different kind of worlds. In Savitri, there is mention of these kind of different worlds also. And these are also our mental states, as Jetsunma shares here, but they also are a world in themselves. So because everything that we experience as a little individual self, we can be pretty sure that it's a world out there. है ना, चाहे हम डिजायर एक्सपीरियंस करते हैं, सो मदर सेज देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिजायर. तो अगर हमने ऐसा जीवन जिया वेयर वी हैव बीन वेरी वेरी डिजायरस एंड एम्बिशियस एंड not really a nice life that we have lived, so then it becomes almost like a sequel that I'll need to enter that world. It's not very smooth entry back to the light. So that's why when we have got right now the human birth,
whatever negativities are there, whatever hell-like, the mental states are there, it is our responsibility, one can say, to transform them. Or when whatever little we do in our own self, we are making a change in the whole world of darkness. So this also comes in Mother and Sri Aurobindo, that this is like that. Yeah. So anything anyone wants to share on these 3 paragraphs that we read? No, there's this beautiful, I don't know, quote teaching reflection from Paramhansa Yogananda. I can pull it up. It's something like that, we don't depend on death to liberate you. You'll go as you are. So it's like we feel कि हाँ यहाँ पे तो जो मर्जी कर ले, and then like we just name our cremation ground Moksha Dham, and we just chant Ram Nam Satya and rest in peace के WhatsApp भेज के we feel okay, it's a done deal. But there he says that whatever has to be done now, because you go as you are. So I find that very powerful, and it really resonates. And secondly, when you read or hear about NDEs, near death experiences, it's really interesting that how whatever someone believed in, like if someone was Christian, if he believed in Christianity, he saw Christ, he saw angels. If somebody believed in whoever, right? Like that's what they saw. So this projection thing, I very strongly, and I think I don't remember, but there was something I think, Monica, only you had shared in the groups a couple, I don't know, few days or a week back about how it's all created, self-created. I think it was from Sri Aurobindo that whatever you think will happen, it will happen. If I feel कि ये होता है, I see that because that's what I create. So it's really powerful. Where am I going? What am I doing right now? If I want to, yeah. Yeah, I Yeah. think Nandini had shared it, and I had highlighted that part of how Okay. we, yeah, Sri Aurobindo sharing that how we are creating our own hell. Yes, I Yeah. had Yeah. Yeah. highlighted that part because that had resonated. Yeah, yeah. And one thing is life and death. And one thing, again, I'm not saying anything new, but even in life, how we create our own hells and heavens by our attitude and everything, that how something that could be really small, we just ऐसे आग लगा देते हैं और वो फैल जाती है like in a forest. There's one. Yeah, and otherwise, for it could just pass by, like how they say, कि, okay, if you are, I don't know, under grace, like if something had to, like a bullet had to hit you between the eyes, it just crosses over, right? Like ऐसे hair को pass कर दिया and stuff. So it's really, really, really how I, that like this thing called no drama. If I have this motto or something, we see how much we are able to transcend. Or yeah, I'll stop. Yes. So I think this particular paragraph is very, very important. That our whole practice can actually, just the crux can be this, that we live in a world of our projections. तो अब इस समय let's practice a little. इस समय अपनी लाइफ को अगर हम देखें इंडिविजुअली, just looking into our lives, all the happenings and facts and figures, we will see that they are not just happenings, we have images about those happenings. Right now, if you want to just practice for 2 minutes, we can see that I have images. There is something that I am thinking about what is happening in my life or maybe in the life of other person. And if we know that, I know that these are all just distorted perceptions and they have no power really, they are not absolutely true. Can we just let them go? The facts and figures may be still there,
but I am not making a story out of it. I'm not making a mental image formation out of it. And then we will see that things are relatively far much okay than what we think they are. So what the word that was used was drama. If we can let go of the drama associated with the facts and figures and let the facts and figures, if at all they want to be, just lie around. Have, as mother says, be more supple, be more trusting. Do not torment my child. Peace, peace, peace. So if we can stop right now all the torment that we are giving ourselves, thinking about what is happening and the commentary about what is happening, then we will see that it's not such a bad state that we are in. And that tells us that it is the mind which makes life hell. Untamed mind, as Jetsunma shares. That whatever it says, we believe in. So when we can stop believing in whatever the mind says about things, people, situations, my own self, then life is so simple. Really, life is so simple. At least in those moments when we can be like that. Not taking the opinions and ideas and judgments about conclusions about the situations too tightly. And letting go of our projections right now of whatever are our present happenings in life or whatever past is worrying me. If I can let go of my projections, whatever mental formations I am making about them, if they can be just kind of dropped for a moment, then we will see that we are good. Yeah. And this thing about quantum physics that Jetsunma shares here also, it gives us a clue that what we are seeing as true is not true. And for example, the very good example in quantum physics that they use is that, for example, आपके सामने कुछ भी है, any material object you see, the way I see it is not how a fly will see, for example, and not any other animal will see exactly like that. तो इसका मतलब कि वो चीज एक्चुअली में वो नहीं है जो मुझे दिख रही है. जैसा मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन है वो उसके हिसाब से मुझे दिखती है. मक्खी को दूसरे तरीके से दिख रही है, कुत्ते को दूसरे तरीके से दिख रही है, मुझे दूसरे तरीके से दिख रही है. तो अब आप बोलोगे कि वो क्या है, अब लड़ाई थोड़ी ना करोगे, कुत्ता लड़ रहा है, नहीं नहीं है ऐसे, मक्खी कह रही है नहीं नहीं है ऐसे. यही तो हम करते हैं. So that's where even quantum physics tells us that we don't see things as they really are. We see them because the instruments that we have got, उसमें limitations हैं. और ये जो हार्ड मास का ऐसा लग रहा है इतना सॉलिड, अगर आप टच करके देखो अपनी बॉडी को, एक्चुअली में यहाँ पे कुछ भी सॉलिड नहीं है क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से. और वो इसलिए सॉलिड फील हो रहा है क्योंकि मेरे सेंस इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे दिए गए हैं दैट दे क्रिएट a kind of a one can say projection or hallucination. One can say it actually is an hallucination that it appears like that. तो जब हमको ये पता लगना शुरू होता है तो फिर हमें एक्चुअली में डाउट होना शुरू होता है कि जो जो मैं सोच रही हूँ हर सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में, किसी और के बारे में, इसका मतलब वहां पे भी आई कांट बी श्योर. सो अंदर से जवाब आएगा ऑफ कोर्स आई कांट बी श्योर. तो फिर आप उसको ढीला छोड़ देते हो. आप कहते हो ठीक है, फिर मतलब सानू की
उसको आप ढीला छोड़ सकते हो, और वो जब हम ढीला छोड़ते हैं देन वी आर इजी, देन वी आर ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट वी हैव बीन गिवन, एंड अभी भी कितना कुछ हमारे पास अच्छा है लाइफ में, out of that we can make something out of this human birth. So it's a very good signal when we become unsure of our thoughts. थोड़ी अनश्योरिटी आनी जब शुरू होती है, it's a very good signal. And one that I feel that also makes us a little open and supple, है ना, कि थोड़ा ओपननेस आ गई कि अच्छा हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, so that opens you, makes you vast and supple rather than rigid, narrow and constricted. Because we know that all of us see limited pieces and we are not seeing the whole truth as it is. Yeah, so that was about this quantum physics part. Yeah, anyone wants to add on here? Yeah, here Jetsunma also shares, as humans we are all equipped with certain kinds of sense organs, है ना, उसकी अपनी limitation है, and consciousness. So there is general consensus about how things are. अब जैसे इसमें ये हो सकता है कि अच्छा, क्योंकि हर बंदा जो मेरे आसपास है उसके हिसाब से ये फोन यहाँ पे है, इसका मतलब ये फोन यहाँ पे है. तो वाई? क्योंकि सबके ही सेंस ऑर्गन्स एक ही जैसे तो हैं. मतलब सारे पागल अगर एक चीज को बोलेंगे कि ये चीज है, तो क्या वो चीज ट्रू थोड़ी ना हो जाएगी. अगर 10,000 पागल मिलके बोल रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट वही वाली बात है कि हम सबके ही सेंस इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसे हैं, and because of that if there is a consensus about it, then we begin to think that no, this is absolutely true क्योंकि 10,000 लोग बोल रहे हैं. लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स जो कि मैटर को अप्रोच करती है, वो भी यही बता रही है कि चाहे बेशक 10,000 लोग बोल रहे हो, बट ये ट्रू नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं. तो ये बहुत अच्छी, ये श्री अरबिंदो कहते हैं दिस इज हाउ स्पिरिट एंड मैटर विल कम टुगेदर. क्योंकि अब आपको मैटर के थ्रू आपको दिख रहा है कि देर इज मामला गड़बड़ घोटाला है, कुछ जो दिखता है वो है नहीं. तो अब तो स्पिरिट तक आना ही पड़ेगा. Yeah, any more reflections here, anyone? Yeah, and just on the last thing that you said, I think death really does it for you. Like death's not your right now, but say for somebody, someone close, this thing that it cannot be just this. It's not possible that it's just the body. You don't feel that, your love or that relationship died with that body. So this thing that you're talking about, it how it challenges or expands more conclusively your thing that I'm more, the other person is more, and the connection is not just physical, because it's not, it's not. And yet it's really very practically felt. It can be practically felt when you lose someone, and of course there would be other things. Yeah. Yes, so I think good to just take this home for practice, that whenever we become aware of our projections, mental formations in the mind, we can be conscious of them and we can drop them immediately. And when we are dropping the projections, that doesn't mean that we are stopping doing any actions and interactions are not happening. Everything is happening, but there is more openness and suppleness and discernment also. It's not just like एक पत्ते की तरह आप उड़ते चले जा रहे हो क्योंकि कोई प्रोजेक्शन नहीं है. There is discernment. There is quality of consciousness के साथ ही discernment जुड़ी हुई है. So you're not dumb when we don't have projections. We are not dumb.
We know, we have a knowing, and that direct knowing tells us which way to go, rather than trying to find out through our projections which way to go. So to listen to that knowing which tells us, and to take our risks basically, because whenever we are trusting the knowing, we are taking risks according to the logical mind. And that's why many masters have been, actually during their own time, they have been called really mad. Sri Aurobindo himself called himself mad at one point of time, that you have a mad husband, letters to his wife. I think it's good to stop here, and then we can just take the last bit next time, and then we start also with the verse number 9 in the next sessions whenever we do it. Yeah, any last reflections, anyone? Your madness, your mad comment right now, and what we were talking about, attachment. I feel that also helps. And there's times when things are just going, like something is happening, somebody is reacting that way, then I'm reacting this way. So there's this voice that says that, my God, like we are all crazy, right? Like we are crazy. Like it usually starts with the other, okay, the other is crazy, and then suddenly it comes to you, okay, and I am crazy too. So that too also helps in bringing some lightness, and also unattachment to people and things कि चल क्या रहा है मतलब, but not in a victim way कि चल क्या रहा है, but ये मतलब सबकी अपनी perceptions हैं, सब अपने उस पे देख रहे हैं, अपनी projections हैं कि imagine, I don't know, 8 billion people on earth and everybody has their own projections and their own illusions of what life is, and believing in it fervently. And then fighting, like you were saying, your dog is fighting with the makhi कि ये world मेरा है, ये नहीं, ये world ऐसा है, मतलब, and it sounds silly when we say it, and yet this is what we are doing. So it's really this madness aspect, also the recognition of it. I feel it helps if one can accept कि हाँ है craziness है, it's a fact कि है, या बन जाते हैं. Yeah. Yes. So just maybe taking a last moment to share and dedicate the merit with everyone, near and far. May our hearts be full, content. May everyone's heart be full, content, and may we have lots of joy, inherent joy and progress in our life. And may we not remain in pain and attachment all the time. May we learn from our experiences and grow through them. Thank you.